Rakhi Sawant, I appreciate you joining me for this interview from where we believe you are, and that is Dubai. And Falguni Brahmbhatt also joining us, your advocate, to clear several aspects of the huge controversy that you are facing, probably the biggest in your life at the moment. Falguni ji, I would like to start with you and ask you that you are representing Rakhi currently, right? I believe you were representing her at some point and then not at some point. See, as far as my representation as a lawyer is concerned, I have been telling everyone that I was with Rakhi, I'm with Rakhi, and I will always be with Rakhi. But due to my certain personal commitments and certain cases which I don't deal with, so I only had requested her and advised her that she should take a lawyer who is, who has an acumen in that because I'm exclusively a criminal lawyer. So certain things I don't do. So therefore, she required some other lawyer. But I was always at the back. I was always supporting her, and I still support her, and I'm always there for her whenever and wherever she She needs is me. my backbone. She's my sister. She's my world. So you still advise her, or rather have been advising her to take some senior lawyer in this case. And Rakhi, have you done Uh, that? not not senior lawyer. I'll be dealing with her criminal cases as far as Adil's FIR, charge sheet, trial is concerned. Rest of the things like 138 and other matrimonial disputes or whatever, that will be dealt by some other lawyer. But whether I'm there or not there in the case, emotionally and physically, I'm always there to support Rakhi. There's no second thought about it. Let people, I don't need to give explanation to everyone that why I'm there and why I'm not there. I'm with Rakhi, she knows that, and I know that. That's more than sufficient. So Rakhi, have you hired some other lawyer as well? I have a 3, 4 lawyer for different cases. Hmm. But right now, I feel Falguni as a sister, as a good advocate. I want to hire her for my this divorce, cases, getting married. Second time he's getting married and not divorcing me. तो उसने अभी तक मुझे डाइवोर्स दिया नहीं है एंड and he got married second time, and this is too much confusion, and this is heartbreaking. And in Ramzan I'm doing all the roza, and I don't know what to do right now. I'm in pain. I'm in Dubai. Suddenly he's given me jhatka, got married again. He's married to me and is not divorced me right now. This is shocking for me, really. So Falguni, Adil has been going around saying that his marriage with Rakhi was null and void. Now, you having been part of Rakhi's life, uh, quite close, can you throw some light on this? Is his claim correct or not? Absolutely false and baseless claims. First of all, Rakhi's marriage with Adil is a legal, very much legal and a valid marriage. Let him talk whatever he wants to talk. We are not here to prove whether the marriage is legal or illegal or null and void. Let him prove. If he's saying so, let him bring certain documents, let him bring marriage certificates, let him bring evidences with respect to Rakhi's earlier marriage. He can go to any extent and say anything. We are not concerned about that. When the time comes, when we go to the court, when we'll take legal action, or whenever we'll initiate legal procedures, we are in a very strong position to answer all the queries to the court. Let him say anything. And even if he wants to say whether it is null and void or it's illegal, whatever, let him prove that. We'll give an answer to that with documentary evidence. So Rakhi, by his saying, law doesn't change. By his saying, the marriage cannot be, only by his saying, the marriage cannot be said to be null and void. You have to prove that legally. So let him go, then we'll see. Rakhi, I'm getting your friend Rashri More's quote here. I happen to be seeing one of her latest interviews, and she said that, like Falguni ji says, that your marriage with Adil is legitimate. And according to her,
वो इसलिए है क्योंकि रितेश की जो मैरिज थी वो वैलिड नहीं थी, बिकॉज ही हैड नॉट डिवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ, एंड देयरफॉर your marriage with Adil becomes legitimate. I'll interrupt here. I'm sorry, Vicky. I'll interrupt here. Sure. Ritesh's marriage with Rakhi again is a question mark. Who is saying this that Ritesh is married to Rakhi? Who has proved that, and who is saying that? Is there any legal document to that effect? You just can't keep on defaming or making, allegations against somebody. Whatever you want to say, bring marriage certificate of Ritesh's and Rakhi's marriage, and Falguni, that just speak. marriage I'll just certificate come in should a be 2 minutes. bona fide. Yeah. Marriage should be bona fide. It should be a legal marriage. Let him prove that. Or let people prove that Rakhi was married to Ritesh legally. Let them bring those documents, and those documents should not be forged. They should be genuine, No, authentic that's what documents. Rashri is saying. Rakhi's marriage to Ritesh is not legitimate But because whether she is married, that's a question, no? We are talking about marriage, whether हुई it's थी कि नहीं? legitimate or illegitimate, whether it's legal or illegal. That's not a question. Whether she is married to Ritesh or not married, that's a big question. But वो तो राखी ने First, you'll have First to of prove all, that. I want to clear that I am not married to Ritesh. And Adil Khan Durrani, null and void certificate, he's making a fake certificate of my marriage with Ritesh again. And this, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि I want to ask court, law, within a 3 months ये कौन से सर्टिफिकेट दिया है आदिल खान दुरानी को शादी करने का? आई एम आस्किंग एडवोकेट फाल्गुनी ऑल्सो, क्या कोर्ट ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे सकता है कि अभी तक मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है कोर्ट से, ना 3 तलाक दिया गया है? सो कोर्ट क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे सकता है आदिल खान दुरानी को कि वो शादी, आदिल खान दुरानी गो गेट मैरिड सेकंड टाइम? आई जस्ट वांट टू आस्क लॉ ओनली. No, but I'll interrupt you here before we get into what Adil has said. Just one more question, Rakhi, and that is Falguni saying that Ritesh से शादी हुई है या नहीं है, वो पहले prove करो. Now, my question to you is that you have been saying earlier that you were married to Ritesh. गाइस, आप रियलिटी शोज एंटरटेनमेंट को आप हटा दो. व्हाई डोंट यू कीप अ साइड? आई डोंट वांट टू कमेंट हियर. सीरियलों में एक एक लड़की की 10-10 शादियां सीरियलों में होती है. सो विल यू से दैट इन अ पर्सनल लाइफ शी गॉट मैरिड? फिल्मों का, एड का, रियलिटी शो बिग बॉस का या अन्य अन्य चीजों का आप वो ड्रामा छोड़ दीजिए, हटा दीजिए. मेरा ड्रामा, यू डोंट नो कौन से सर्कमस्टांसेस में व्हाट आई डिड, व्हाट आई नॉट डिड. चलो एक बात मान भी लेते हैं, आई डिडंट मैरी टू रितेश, बट चलो एक बार मान भी लेते कि किया है, बट ही वाज अ मैरिड, ही हैज अ किड, दैट टाइम ही वाज नॉट डाइवोर्स. तो मेरा मैरिज हिंदू तरीके से 2 औरतों के साथ शादी नहीं होती है एक साथ में. इफ आई एम मैरिड टू रितेश, इफ आई एम सेइंग इफ, तो ही हैज टू, उसको मुस्लिम बनना पड़ेगा. मुस्लिम बन के उसे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी. देन माय मैरिज इज विथ रितेश इज, यू नो, लॉ के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से होता है शादी. बट आप, यू आर ऑलरेडी मैरिड विथ वन वुमन, हैज अ किड, एंड नॉट डाइवोर्सिंग हर एंड मैरिड टू मी. माय मैरिज इज नॉट लीगल बाबा. कोई भी कोर्ट साबित नहीं कर सकता है. रितेश का अभी 6 मंथ पहले ही डाइवोर्स हुआ है. And Ritesh is a nice guy, and I don't want to say anything about Ritesh. हमारा पर्सनल मैटर, फिल्म का मैटर, ड्रामे का मैटर, रियलिटी शो का मैटर क्या था, दैट वाज अ डिफरेंट. रितेश और मेरा शादी का झूठा सर्टिफिकेट आदिल खान दुर्रानी एंड उनकी फैमिली ने बनाया है टू गेट मैरिड सेकेंड टाइम और मुझे टॉर्चर करने के लिए, एज अ फेक सर्टिफिकेट. Are you और aware? मैं आपके सामने वकील साहिबा को पूछना चाहती हूँ, क्या कोई कोर्ट इमीडिएटली ऐसे
एक शादीशुदा होते हुए मर्द को क्या दे सकता है कोर्ट दूसरी शादी करने के लिए? नल एंड वॉर्ड इतना इजी है कि विदाउट आस्किंग मी, विदाउट कॉलिंग मी इन द कोर्ट, विदाउट गिविंग मी एनी सर्टिफिकेट नोटिस, इन्हें सर्टिफिकेट No, दे दिया it's not शादी करने का। possible. आई एम आस्किंग Not possible. कोर्ट। Legally not possible. सी विकी जी, Your marriage with Adil is still in existence. So we do not want to go into the details. Let us not disclose what our legal steps will be or what will be doing, because talking too much about everything here will spoil our case. So let us not go into the details. As far as your marriage with Adil is concerned, till date, till today, it is legal. तो क्या मैं, विकी साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के लॉ, हिंदुस्तान के कानून, ही ऑलवेज से दैट आई एम अ मुस्लिम, आई कैन मैरिज 4 times. He always, from day one, I got married after 1 month. उसने मुझे यही धमकी दी है। मैं सारे मुसलमानों को, मुसलमान मुफ्तियों को, मुसलमानों के जो बड़े बड़े जो हमारे मौलाना साहब, भाई साहब है, सबको पूछना चाहती हूँ। ही इज ऑलवेज, मैं हिंदू लड़की हूँ, हिंदू लड़की से जबरदस्ती उन्होंने मुझे इस्लाम कबूल करा के मुस्लिम बनाया। मुस्लिम बनाने के बाद मुझसे शादी करी। शादी करने के बाद आई अग्रीड, ओके। और फिर स्टार्टिंग उसने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी, विकी साहब, फाल्गुनी जी, के आई विल डाइवोर्स यू इफ यू डोंट मेक मी मिट सलमान खान और ऑल अदर आर्टिस्ट, आई विल गिव यू 3 तलाक, आई विल डाइवोर्स यू इफ यू कांट गिव 20 lakhs टू माई फादर, I will divorce you if you can't give jewelry to my mother. I will divorce you if you can't make me meet Farah Khan, Shah Rukh Khan. I will divorce you if you can't do मुझे बिग बॉस में नहीं डालोगी तो आई वॉज डाइवोर्सिंग। आप लोग फराह खान मैम से पूछ सकते हैं कि मेरे शादी के दौरान मैंने कितनी बार उन्हें कॉल करके बोला है, आदिल खान दुरानी को काम दो, आदिल खान दुरानी को काम दो। मैम ने बोला भाई मेरे पास उसके लिए कोई काम नहीं है। और मैंने बाद में साइड में ये भी बोला कि मैम ये मुझे मार डालेगा, फराह मैम ये मुझे मारता है। पूछो फराह मैम को फोन कर करके, फराह मैम ये मुझे मारता है, फराह मैम ये मुझे तलाक की धमकी देता है अगर आपने उसको काम नहीं दिया तो। एक बार फराह मैम को पूछो आप, फराह खान को, फराह खान बोलेगी यस ये बिल्कुल राखी सच बोल रही है। शायद मेरे पास उन डेटों का वॉइस मैसेज भी होगा उनके उनके पास मैंने भेजा हुआ। द राखी सावंत कहते सब मर्दानी मर्दानी ताकतवर, लेकिन अपने पति की, शौहर के घर में मार खाती थी जेवरों के लिए। मुझे इनके फैमिली ने कितना प्रताड़ित किया। शादी का 1 महीना तो बड़ा अच्छा लगता है, शादी का 1-2 महीना तो बहुत अच्छे से रखा। जो अभी आजकल न्यूज़ों में जो दिख रहा है वो अपनी दूसरी बीवी के साथ भी कर रहा है, वही मेहंदी लगाना, वही लड्डू खाना, वही मिठाई खाना, वही चुमना। बस मेरे साथ फर्क यही था कि मेरे कैमरे के साथ सामने मेरे साथ नहीं किया और उसके साथ कैमरे के सामने कर रहा है, दिखाने के लिए कि हाउ शरीफ ही इज। राखी, you have made one comment that आदिल की 5-6 शादियां हो चुकी। आदिल जब जेल गया 6 महीने, 376 केस में जब वो 6 महीने अंदर गया, कानून हमारे हिंदुस्तान का इतना खराब नहीं है विदाउट सबूत। आदिल खान दुरानी को 6 महीने जेल में डाला मैसूर जेल ने, क्योंकि उनके पास वो सारे सबूत थे। लेकिन बाहर आने के बाद उसने मुझसे बदला लिया। झूठ बोल बोल के राखी की 5 शादियां हो गई, राखी की 5 शादियां हो गई मेरे साथ। मैंने साथ फाल्गुनी जी ने सारे मेरे साथ जो उसने किया था सबूत कोर्ट में पेश किए, तब जाके मेरे केस में वो 22 दिन जेल में रहा है। एम आई राइट फाल्गुनी जी, एडवोकेट जी? एब्सोल्युटली, क्या हमने कोर्ट को सारे एब्सोल्युटली सबूत राइट। दिए हैं? सारे सबूत दिए हैं और भी है जो आने वाले दिनों में हम कोर्ट में भी देंगे और पुलिस स्टेशन में भी देंगे। आप बेफिक्र रहिए। और
मेरे हिसाब से इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस ना देते हुए हमें जो लीगल तो प्रोसीजर्स करने उन्होंने हैं हम वो पूरा करेंगे। बदला लेने के लिए कि हमने उसे जेल पहुंचाया, बदला लेने के लिए मीडिया में झूठ बोल रहा है कि राखी सावंत की 5 शादी हो गई है। राखी सावंत, ये भी एक गुनाह है। बोल रहा है वो मेरी 5 शादी हो गई है। राखी सावंत का यूट्रस नहीं है। राखी सावंत ये है, हजारों करोड़ों गालियां दे रहा है मुझे, मेरी इमेज खत्म करने के लिए, ताकि मुझे बॉलीवुड में काम ना मिले और बॉलीवुड में मुझे कोई खड़ा ना करे। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड मेरी फिल्म भी सुपरहिट हो गई है। बॉलीवुड, पूरा वर्ल्ड मुझे पसंद भी करता है, मुझे प्यार भी करता है। अभी अफसाना खान के साथ मेरा गाना आया, वो भी सुपरहिट हो गया है। द ग्रेस ऑफ गॉड, द ग्रेस ऑफ ऑल जनताज लव। उसने पूरी कोशिश करी कि इन लोगों ने मुझे जेल पहुंचाया, तो बाहर आकर वो पूरा रिवेंज लेने के लिए मुझ पे इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम विकी साहब लगा रहा है। मैं आपको पूरा प्रूफ कर सकती हूं कि उसकी 6 शादियां पहले हो चुकी है। सच्चा मुसलमान है ना, एक हिंदू लड़की को इस्लाम कबूल करा के ना उसको तालीम देता है कुरान पाक की, नमाज की, शादी करता है सच्चा मुसलमान, उससे साथ बच्चे पैदा करता है। ना कि 7-7 महीने उसको शादी करके घर में उसके साथ शारीरिक संबंध बना के 7 महीने में छोड़ देता है। ये गलत है। ये मुसलमान सच्चा हो ही नहीं सकता। और झूठी कुरान पाक पर, पूरे आप यूट्यूब में जाके देखिए, कुरान पाक पर, पवित्र कुरान पाक पर हाथ रख के झूठी कसमें खाता है, लड़कियों को लूटता है। मुझे लूटा है विकी साहब, फिर भी मैं दुबई में आके बस गई। मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये मेरे पे दाग लगा रहा है, ताकि मैं दोबारा शादी ना करूं, मुझे कोई बॉलीवुड में खड़ा ना करे और समाज में मैं बेइज्जत हो जाऊं, समाज में मुझे बेइज्जती मिले। लेकिन मेरी जनता सब जानती है, ये कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन खुदा का न्याय हमेशा, उनका तराजू जो है खुदा का, वो सच्चाई की तरफ ही रहेगा विकी साहब। राखी, आपने कहा था कि सोमी को कोई बचा ले, आई रिमेम्बर। और जब मैंने इनसे पूछा ये आपके स्टेटमेंट के बारे में, आदिल ने कहा कि दुनिया को कोई राखी से बचा ले। आपने कभी सोमी से कोई मुझे तो सोमी नहीं, से कोई वो तो उस बातचीत? बेचारी लड़की पे मुझे तरस आता है। जो अब कौन आदमी कैमरे के सामने अपनी बीवी को ऐसे चूमता है? कौन सा सच्चा मुसलमान रमजान में बार बार ऐसे चूम के? अगर तुम्हारी बीवी है, इनलीगल बीवी है, पहली बात तो आदिल खान दुरानी की, वो इनलीगल बीवी है क्योंकि उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया है और मुझे मेरे सिग्नेचर के बगैर, मेरी रजामंदी के बगैर उसने शादी कर ली है, कोर्ट का नाजायज फायदा उठाकर, फेक सर्टिफिकेट बनाकर। और अभी मैं चाहूं तो उन दोनों पे केस कर सकती हूं और इंशाल्लाह मैं करूंगी, क्योंकि मुझे उस पुअर लड़की पे, वो बेचारी लड़की पे तरस आता है। आदिल खान दुरानी ने मेरे इतने न्यूड वीडियो बनाए हैं, मेरी मजबूरी है कि मैं देश की जनता को दिखा नहीं सकती हूँ। हस्बैंड वाइफ एक कमरे में रहते हैं, मैं न्यूड में नहाती हूँ। आदिल खान दुरानी ने मेरे न्यूड वीडियो पीछे से आगे से बनाए हैं, मुझे धमकी दी है, मुझे धमकी दी है कि मेरे खिलाफ बोलेगी, मुंह पे तेजाब फिकवा दूंगा, तुझे मरवा दूंगा, तेरे न्यूड वीडियो वायरल करूंगा। न्यूड वीडियो बनाया उसके सारे फोन में। आपने बनाने क्यों? राखी, राखी, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन let हियर। us, आई एम सॉरी टू yeah, इंटरप्ट। let us not go into, फाल्गुनी जी, yeah, let क्या us not, आपने वो वीडियो देखे हैं कि नहीं? अभी इसके बारे में कोई बात मत करो, Falguni, I think she's आप asking शांत a हो very जाओ। important question. Have you seen those videos or not? I cannot comment on this right now. It's a matter of confidentiality. I cannot But reveal Rakhi, everything over here I have a question for because you. this will be published. As a lawyer, I cannot give you all the details Rakhi, I on an have a question online for you. platform. Why did you allow these videos to be made? नो,
जब She आप did. She हस्बैंड did वाइफ not एक कमरे में allow. रहते She हैं, did not मैं allow. She did not मुझे तो allow. पता भी नहीं है कि वो फोन कर रहा, मुझे लगा इज चैटिंग ऑन फोन, लेकिन इज राखी मेकिंग अ एक वीडियो, सेकंड, तो मैं एक बैक से एक म्यूट हूँ। सेकंड, एक सेकंड में इसका जवाब देना चाहूंगी. Vicky, just I can tell you only this much as far as these videos are concerned. Since the registration of the FIR, we have recorded the statements, we have given proofs and evidences to the police station. We have also brought this to the notice of the court in our intervention application. Everywhere we have mentioned regarding that, but that phone was hidden somewhere. Rakhi has been saying, if you see her earlier videos also, she has been saying every time in each of her interviews and everywhere, she has been going to the police station every now and then that you seize his phone, but that has not been done. And after coming on bail, he was not supposed to reveal anything. He has been doing all sorts of things which he is not supposed to do after being released on bail. Actually, he's been violating the bail conditions and he's been doing everything because he thought now whatever he'll be doing, he'll be becoming a hero. And there were certain reasons why we were restrained not to do or take action against him because we were waiting for the police to take action, but still nothing has happened. So as far as the videos are concerned, Rakhi has not said this today. Earlier also she has said, and not only on media, TV channels, anywhere, she has recorded this in her statement. She has recorded this before the uh, magistrate's court. So this we have been telling. You see the past videos, you see her past interviews. She has been telling this, but no action has been taken as of now. Rakhi, But have you? now we'll, yeah. Yeah, sorry, ma'am. Please continue. No. So we'll be going step by step now. Now, whatever he has been doing, we were waiting. We have been collecting evidences. We have been collecting all the data. We have been doing everything. Now, at this point, I'm telling you that it is not necessary for us to give him any kind of importance because he is doing it for the sake of publicity. Rakhi Sawant was in his life for this publicity purpose only. That has been, he has taken her money, which he refuses to return. That also we have taken legal action. साढ़े Everything he तीन has done. करोड़ साढ़े तीन Yes. करोड़ उसने मेरे लिए हैं फॉर अ कार बिजनेस. आई हैव ऑल द चेक्स विथ मी. आई हैव ऑल द चेक्स विथ मी. बैंक में डालकर भी उन्होंने मतलब पूरा वो उन्होंने ही क्लोज हिज अकाउंट. आई हैव ऑल द प्रूफ. मैंने कोर्ट को सब दिया है. एंड ही इज सेइंग दैट आई हैव अ 5 हस्बैंड. आई एम टेलिंग हिम आदिल खान दुरानी, अगर मेरे 5 हस्बैंड है तो उसको कोर्ट में और देश की जनता के सामने लाओ. Except you, I have married to only Adil Khan Durrani. He is only my husband, present husband. और मैंने उसके अलावा किसी से शादी नहीं करी है. अगर मैंने करी है तो 5 सर्टिफिकेट शादी के लाओ, मंदिर के प्रूफ लाओ और कोर्ट के प्रूफ लाओ एंड ब्रिंग देम फ्रंट ऑफ मीडिया और ब्रिंग देम फ्रंट ऑफ कोर्ट. Rakhi, have you called Somi? Have you spoken to her? No. Do you I know don't. her? She's an innocent. Do you know She her? don't know anything. Do you She's know her? enjoying her life. She don't know anything. But do you know her? She will realize one day, but not today. आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, मिले हैं कभी? मैं कभी नहीं मिली हूँ, मैं नहीं जानती हूँ. ये जो अभी कर रहा है ये सब मेरे साथ पहले कर चुका है ये. Rakhi, I have one more question to ask you. You had stated that Somi and Adil were exchanging messages. Means? Text messages एक दूसरे को भेजते थे. मैंने पहले भी पूरी दुनिया को बताया है. मैंने 1000% जो गुनाह शादी के बाद लॉयल्टी का जो आता है हस्बैंड का, he was not loyal to me. विकी, ये सिर्फ सोमी के साथ की चैट्स नहीं है. जब हमने एफआईआर रजिस्टर की थी, when we had registered an FIR, we had given at least 10 to 15 girls chats while he was in marriage with Rakhi. When Rakhi was in Big Boss Marathi,
After she came back, when she saw that that phone was full of messages with his nude pictures, with his videos, He with dirty always show chats, that. yeah, yeah, everything was there, all nudity on his chats and all bad things, and we have got evidences. We have got On the all chats the evidences. on the chats with the On girls. the chat, he's showing his private Yes, parts. different girls, Say, see, all the many girls, girls. many girls. Many girls, and we have proofs to that effect. And this all has been given to the police station, to the court. It's not that she's making allegations and just she's saying for the sake of whatever Rakhi is saying. Being an advocate, I will not support anybody who's lying or who's talking or who is making a case without evidence. After seeing all the evidences, if you see the chats, if you read the chats, you'll get a shock of your life that this man can go to this extent. Then when Rakhi was in Big Boss Marathi, when he was in marriage with Rakhi, he has been continuously calling girls to different hotel rooms. We have everything, everything on record, black and white. There's nothing which we are just saying it for the sake of Um, saying it. I'm just, And yeah. being a wife, in being a wife, I was calling those girls saying, your husband is a womanizer. He's paying us money. He was, I feel so shame कि मेरे पैसे वो लड़कियों पे उड़ाता था. When I was going to London, America, Canada, all the countries, he was calling to my house. लड़कियों को बुला के ड्रिंक्स, पार्टीज, मेरे मेरे घर को एक बाजार बना दिया था. और वॉचमैन कहते कि मैडम ये क्या और आपके घर में इतनी लड़कियां आ रही है. एंड आई वाज शॉक्ड व्हाई ही इज डूइंग, व्हाई यू नॉट लॉयल टू मी. एवरी डे वी वाज फाइटिंग. शादी के 1-2 महीने ठीक रहा. ही टुक माय मनी एंड ही वाज नॉट लॉयल टू मी. Rakhi, I want to ask you about your bail status here. Have you made your plan how you're going to go about it, and how are you trying to get the bail? And He did That जानबूझ I'll के, he answer. did the case on me. That I'll ask. That I'll answer your question. And Adil That has case said, also. before you start, ma'am, on this answer, Adil has said that the Sessions Court and the High Court has rejected her bail. Her bail was rejected by the Session Court, by the High Court, but we have again filed a bail application which is pending. So very soon you'll get to know about that also. Falguni ji, you are applying for the bail next again. It's already applied. मैं अकेली बिना माँ बाप की बेटी, I don't have anyone except my Falguni friend. So what he planned everything. He took my 8-year-old friend, राशि मोरे, everyone he took it. पैरों में पड़ पड़ के राशि से उसने राखी बंधवाई. और देर इज ऑन यूट्यूब, उसने राशि मोरे से शादी भी करी. अब आप बताओ, आप लोग जाके यूट्यूब में देखो, शादी भी करी है उसने राशि मोरे से. व्हाट शुड आई से नाउ? राखी बंधवा के इतना कौन गिर सकता है भाई? नो. Falguni, has he married Rashri More? No. No. But there are YouTube, what he's been doing, again, he's committing an offense. What he's been doing, he himself is asking people to make YouTubes of him and Rajshri, and they are showing that they both are married. She's cooking. Means they all are fabricated videos. You know how they are like made तो यही तो videos मैं where you कहना can make चाहती हूँ out. कि देखो, But राशि then मोरे then बहन होने के साथ उसकी he बीवी है, बताओ. he has been doing that. ये He सच में has नहीं been हुआ है. making those, सच में नहीं हुआ है, ये फैब्रिकेटेड वीडियो है. of आई course, डोंट नो, वी डोंट fabricated. नो, वी डोंट नो एनीथिंग. Where are those जैसे वो videos? मेरे लिए झूठ Where बोल are रहा है, those? 5 हस्बैंड. Where are? वो They मैं are on आपको कहती हूँ, YouTube. कल वो 5 झूठे हस्बैंड को खड़ा भी कर देगा. ही इज अ क्रिमिनल माइंडेड गाय. वो झूठे 5 हस्बैंड को कल वो खड़ा भी कर देगा, पैसा देकर. Falguni ji, can you throw some light on Adil and Rashri? Because, I'm also asking this because Rashri happened to say in one of the interviews, in fact, the very same where I referred to her earlier, that she was with Adil close as a sister, but she dissociated herself from him for some reason which she doesn't want to reveal now. Okay, as far as the marriage is concerned, there are videos which are viral. As far as my knowledge is concerned, I can say it. I can say that they are not married, but if that is so, I will have to check
find out the details. And if that is true, if they have got married, according to me, my knowledge, it is not true. But if that is also true, then again he's committed an offense. How can he get married to so many women at a time? So that question only Rajshri can answer. As far as my knowledge is concerned, He I'm was sure. married when I married to him. I मुझे पता नहीं था. He was married 3-4 times before. He did everyone like this. एक तो ईरानी लड़की थी बिशी बेचारी, उसके साथ तो इतना बुरा किया 5 साल शादी करके, एंड क्या क्या ऐसी हरकतें करी जो 6 महीने उसको जेल में पहुंचाया उस लड़की ने. एंड शी बेचारी शी रिटर्न टू ईरान. शी इज क्राइंग. शी आस्क हेल्प फ्रॉम मी. शी मतलब उसे इतना पीटता था, उसके दरवाजे उसे इतना पीटता था. मैंने मीडिया में वो सारे ऑडियो, आप लोग यूट्यूब में जाके देखिए. एम आई राइट? वो उसे इतना मारता था, पीटता था. सारे मीडिया में वर्ल्ड में मैंने बताए थे कि सी ये कितना जितना उसने मुझे. मैं बॉलीवुड में इंटरव्यू करते टाइम हर वक्त मैं बिंदास हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हस्बैंड मुझे मार नहीं सकता घर में 4 दीवारी में. मैं बॉलीवुड में मेरी पेट के कारण, मेरे ब्रेड एंड बटर के कारण ड्रामे करती हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ गलत नहीं हो सकता शादी के बाद. दैट एंड बटर कैमरे के सामने. आई डोंट हैव एनी गॉड फादर. मुझे अपने आप को जिंदा कॉमेडी करके रखना पड़ता है मीडिया में. अदरवाइज कौन मुझे पूछेगा फिल्मों में? मैं मेरे घर कैसे चलाती? मैं मेरी माँ का इलाज कैसे करती? मैं भाई बहनों की शादियां कैसे करती अगर मैं ऐसे जोकर बन के या ऐसे कॉमेडी करके लोगों को वर्ल्ड में नहीं हंसाती, रियलिटी शो नहीं करती, तो मैं क्या करती? आप बताइए विकी जी, मैं क्या करती? इसने वही ड्रामा का फायदा मेरा उठाया. Will not trust you, people will trust me, my innocent face. इसके इनोसेंट के फेस के पीछे ही सच अ क्रिमिनल. Falguni ji, let's conclude with you telling us what's the status of Rakhi acquiring the bail, and when does she stand a chance of coming back to India? See, I'll tell you one thing. Rakhi is not in Dubai because of bail, that there is a case against her. People are spreading rumors that she has ran away because there is a case against her, or she will be arrested if she is in India. That is not true. She has got a lot of work there. She's been, by God's grace, she's doing well. That's why she is there, and very soon here. And she will answer all the queries to all the media persons, and she will also reveal certain truths, facts about Adil and his whatever uh, offenses he has committed after coming out on bail. Everything she will reveal, and very soon we'll be taking steps against. एंड आई वांट टू टेल विकी, ये अभी वो सोमी को बोलेगा, बेबी डोंट वरी, बेबी डोंट वरी, यू आर माय वाइफ, बेबी डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग. बट हिंदुस्तानी लॉ के हिसाब से, भले मुस्लिम लॉ के हिसाब से नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी लॉ के हिसाब से, बिकॉज मैं दुरानी से सिर्फ निकाह नहीं पढ़वाया, कोर्ट मैरिज किया. कोर्ट मैरिज क्या होता है? एम आई राइट फाल्गुनी जी? उसके हिसाब से, विदाउट आस्किंग मी, विदाउट माय परमिशन. She's having a registered marriage certificate from the registrar of marriage. It's a legal and a registered marriage. So And I can sue both of them without taking permission. With Everybody Adil. knows he's my husband. With Adil, she has a legal certificate. yes, of Yeah. course, of course. There's a marriage certificate. Yeah, And so the marriage certificate is already there on everywhere, every social media platform, in the courts also. That certificate, anybody can go and check with the registrar of marriage. yeah. It's authentic and a genuine document. So you And are saying that that marriage He's certificate, lying to Somi. He's even lying even to Somi. I'm proof, not married to what Rakhi. what Adil has done, even if Rakhi is married, suppose for the allegation that she is married to Ritesh, there has to be the marriage has to be dissolved by way of adopting legal procedures. Even
Adil, to prove that marriage is null and void with Rakhi, he has to adopt legal procedures. Has he done that? If he has done that, then where was Rakhi? Why she was not summoned by the court? See, it's all about legal procedures. I will not get into that, but this marriage is definitely whatever Adil has done. He will be in trouble very soon, and will initiate legal action against him, legal proceedings against him. Rakhi is coming back soon to India, so very fast legal proceedings will start. And let us not get into all these things on platforms like this. We are here to discuss certain things which can be discussed, but legal things cannot be discussed here. So let's see who's right and Fair, who's legal and who's illegal. fair, Let time tell, let the court decide. Time fair. will tell everything. But you have said that Rakhi can come to India if she decides tomorrow that Of to course fly, she can. and Of course she can. there will be no She arrest. can come. As Adil is saying that She can come. 2 hours she'll be arrested. Lying, Vicky, why don't you understand? वो बिग बॉस की लड़की से शादी किया, मैं बिग बॉस की लड़की से शादी किया. वो अपना वो टेम्पर बना रहा है. He just want to go to Big Boss. He can use anyone. I think Vicky, Adil should be more concerned about his cancellation of bail rather than Rakhi being arrested. He But I'm should be repeating, more worried I'm of repeating not again. going back to jail. He should But be going. He should be concerned about not Rakhi going to jail, but he 25 himself cases going to jail. against him, criminal but cases. I'm 420, 420 rape case, 25 cases against him. Am I right, Falguni? 25 cases. Yes, A but major cases yes. against Adil Khan Durrani. I'm just repeating that she will not be arrested in 2 hours as he has claimed. Falguni. No, no. Definitely not. And end of the day, the court will decide, and it is the discretion of the police. Today also, if the police had to arrest her, they would have taken steps and let the court decide. No, why? Who is he to decide? We were quiet. I was not coming forward. Rakhi was not coming forward. We don't want to give anybody undue importance who is just wanting to seek publicity. We don't want to give anybody publicity. This would be at least my last interview because I don't want to get into this. Let us go to court and let us decide what has to be done as far as he is concerned. We don't No, want to and give him any Vicky, he wants importance. that. I was quiet because मैं court के against नहीं जा सकती थी. And Ramzan is going on. Because I believe in God. God says sabr. So I was not talking against him. I was just quiet क्योंकि मुझे कोर्ट पर लॉ पर विश्वास. So मैं मीडिया में जाके फालतू बातें मुझे नहीं बोलना करना था. But now he's doing too much. All allegations जो सारे झूठ मुझ पर लगा रहा है, देश की जनता को वल्गा रहा है, देश की जनता को झूठ बोल रहा है. And I'm doing a job on TikTok here in the. I'm officially signed contract. I have to go to TikTok here. And वहां पे normal लोग, they ask any police question to me. वो सच जाने बगैर सारे झूठे क्वेश्चन वो लोग मुझे पूछते हैं. I can't answer them each and every one. Well, I'm sure Because they don't know truth. They don't know truth. Well, I'm sure this case and this controversy is far from over. But I appreciate. No, I don't want to speak. I don't want to speak in media, but it's against me. But finally, you have. झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. Finally, you have. I think it came to a point where you thought you should. Now he will go to jail because without taking my permission, without divorcing me, he got married. He will go to jail. This is 1,000. We shouldn't be surprised also that he got influenced by Poonam Pandey's stunt and maybe he's doing a stunt also. You never know. To just seek publicity, this could be a fake marriage also. We never know. But still, let the court decide, let the police decide. We'll see. What publicity? What publicity? Publicity? आप देश की जनता को इतना उल्लू बना रहे हो. कोई झूठा मर जाता है, कोई झूठी शादी कर लेता है. What is this? I conclude this conversation, Rakhi, and I must thank you for
talking to us. And the same applies to you, Falguni ji. Thank you once again.